हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ के क्लास 12 के ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के बारे में, जो कि यूनिट 5 है। तो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ डेलीगेशन क्या है, इसका आंसर लिखिए। द इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ डेलीगेशन बिकम्स क्लियर फ्रॉम द फैक्ट्स दैट नंबर 1, देखिए, relieving top executives. Delegation of authority helps the managers to free themselves from the burden of routine tasks. First up, they can then focus better on such priority areas as needed to be pursued by them alone. First up, delegation enables them to concentrate more on diversification and expansion of business activities. दूसरा देखिए, improved functioning. First, in the absence of delegation, some persons may be burdened with more tasks while others may not have sufficient work to do. First, delegation helps in rationalizing the function of the organization. First, work is divided among various persons in such a way that it is done in an efficient way. उसके बाद देखिए नंबर 3, यूज ऑफ स्पेशलिस्ट. डेलीगेशन enables the use of specialist for taking up different functions. First, a production manager will be assigned the job of production, a sales manager will look after sales department, a lawyer will look after legal matters, and so on. उसके बाद नंबर 4 देखिए, helps in employee development. As a result of delegation, employees get more opportunities to utilize their talents. First of, it allows them to develop those skills which help them to perform complex tasks. First of, delegation helps in making better future managers by giving them chance to use their skills. और हाँ, इससे पहले बता दूं, अगर आपको ये सारे पीडीएफ चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। सारे के सारे पीडीएफ मैं आपको वेरी रीजनेबल रेट में शेयर कर दूंगा, ठीक है। सारे के सारे यूनिट्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए नंबर 5, हेल्प्स इन एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. डेलीगेशन फैसिलिटेट्स एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सनल फॉर टेकिंग अप लीडिंग पोजीशंस इन सम न्यू प्रोजेक्ट्स. उसके बाद देखिए, बेसिस ऑफ बेटर रिलेशंस. डेलीगेशन हेल्प्स इन अचीविंग बेटर रिलेशनशिप्स बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट, द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी of the subordinates are clearly defined. First, as a result, conflicts are avoided. उसके बाद देखिए नंबर 6, बेटर कोऑर्डिनेशन. एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, नेमली अथॉरिटी, responsibility and accountability, clearly define the powers, duties and the answerabilities attached to the various positions in an organization. First up, this helps in avoiding overlapping of duties. First up, Residently, better coordination among various departments can be achieved. And last point, देखिए, quick decision making. The subordinates are granted sufficient authority to take decisions. First up, they need not to go to their superiors time and again for taking decisions concerning the routine matters. First up, this increases the speed of decision making. ठीक है। तो उसके बाद बाकी अगले वीडियो में हम बात करेंगे डिफाइन डिसेंट्रलाइजेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, और भी कई सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाए देखिए, वीडियो आपको मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। और अगर पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे पीडीएफ आपको मैं सेंड कर दूंगा वेरी रीजनेबल रेट में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।